Good afternoon, dear students. How are you? I hope you are fine at home. We were learning active passive. Today we will learn further. Type 2. Model auxiliary मॉडल ऑक्सिलरीज का पैसिव वॉइस सब बनाएंगे बी प्लस थर्ड फॉर्म ऐड करके बी प्लस थर्ड फॉर्म ऐड करके बनाएंगे ऐड बी प्लस थर्ड फॉर्म फॉर एग्जांपल ही कैन डू इट he can do it it can be done by him it can be done by him can you solve this mystery can you solve this mystery can this mystery be solved by you मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं उनका पैसिव वॉइस बी प्लस थर्ड फॉर्म से बनाएं एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं मोर एग्जाम्पल है why could you not defeat him why could you not defeat him why could he not be defeated by you why could you not defeat him why could he not be defeated by you तो मॉडल ऑक्सिलरीज का पैसिव वॉइस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऐड करके बनाएंगे he can do it इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं it B plus can be done by him. Can you solve this mystery? Can this mystery be solved by you? Why could you not defeat him? Why could he not be defeated by you? To add B plus third form while changing passive voice of model auxiliaries. Type third it is time to take tea it is time to take tea it is time for plus object plus 2 plus b plus third one it is time to take tea हम कहते हैं चाय पीने का समय हो गया है पढ़ने का समय हो गया है खेलने का समय हो गया है it is time to take tea it is time to play cricket it is time to go to the field it is time to go to bed देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऐसा करने का समय हो गया है तो इट इज टाइम टू टेक टी चाय पीने का समय हो गया है खेलने का समय हो गया इट इज टाइम टू प्ले सोने का समय हो गया इट इज टाइम टू गो टू बेड पढ़ने का समय हो गया इट इज टाइम टू go through it is time to study okay it is time
इट इज टाइम वाले वाक्य का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? इट इज टाइम प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस बी प्लस थर्ड। फॉर एग्जाम्पल ये इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। It is time for tea to be taken. It is time to play cricket. It is time for cricket to be played. We change passive voice of by following these rules. This rule: it is time for tea to be taken. It is time to play cricket. Type third, imperative sentence. What is imperative sentence? I have told you earlier. Sentence which expresses command. Sentence which expresses command, request, entreaty, command, request, entreaty. A sentence which expresses command, request, entity is called imperative sentence. Imperative sentence. For example, please help me. This is imperative sentence. March forward. This is imperative sentence. Do not make a noise. This is imperative sentence. तो imperative sentence का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? According to sense. According to sense, we use you are requested, advised, forbade, forbidden, ordered. So we use these words: you are requested, advised, forbidden, ordered. Sometimes we say asked. When we find no hint of request, advised, forbidden, ordered, then we use sometimes asked. I take one example from here. Please help me. इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो यहाँ पे प्लीज रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ये शब्द लगाने के बाद, इस तरह के शब्द लगाने के बाद आप टू फर्स्ट फॉर्म से शुरू करेंगे। टू फर्स्ट फॉर्म लगाएं, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। मार्च फॉरवर्ड, here march forward, यहाँ पे ऑर्डर की सेंस आई हुई है, यू आर ऑर्डर्ड
to march forward. You are ordered to march forward. Do not make a noise. Do not make a noise. शोर मत करो. You are forbidden to make a noise. You are forbidden to make a noise. Or you can say you are asked not to make a noise. Not to make a noise. So we can make imperative sentence by following this. I have given here example there. Imperative sentence which expresses command, request or entity is called imperative sentence. Dear students, write simultaneously whatever is written here. If you write simultaneously, then it becomes easier to learn at any time. Sometimes it is not possible whatever was written, whatever was taught, if you don't write. But if you write, you can open your notebooks and check whatever has been told you. So it is always better to write something. So please keep writing something. It is better for you. Yes. Now, when we find such type of sentences, open the door. जब हमें कोई भी सेंस नजर नहीं आती है, कोई ऑर्डर की, कोई कमांड की, कोई रिक्वेस्ट की, कोई एंटिटी की, तब उस सेंस में हम लेट का प्रयोग भी कर देते हैं. लेट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म. लेट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म. हियर वन एग्जांपल हियर, ओपन द डोर. ये कैसे बनेगा? लेट द डोर बी opened. Close the window. Let the window be closed. Obey the rules. Let the rules be obeyed. So sometimes we make by this. When we find no sense, like order, requested, forbade, then we make in this way by following let plus be plus third form. Let the open the door, let the door be open. Close the window, let the window be closed, open. Obey the rules, let the rules be obeyed. So we also can make such of sentences by following this. Dear students, milk is shower. पैसिव वॉइस में बहुत तरह के सेंटेंसेस हैं. डिपेंड करता है कि उनमें क्या सेंस निकलती है. अलग अलग तरह के सेंटेंस में अलग अलग तरह से बना सकते हैं. बहुत ज्यादा वेरिएशन है पैसिव वॉइस के अंदर. मिल्क इज शावर, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? मिल्क इज shout when it is tasty. Milk is shout when it is tasty. दूध खट्टा होता है
व्हेन इट इज टेस्टेड, जब इसे टेस्ट किया जाता है, इसका पैसिव वॉइस ये बनेगा। रोज इज स्वीट, गुलाब मीठा होता है, तो इसमें रोज इज स्वीट। कब? व्हेन इट इज स्मेल्ड, जब इसे सूंघा जाता है, इसको टेस्ट किया जाता है, इसको सूंघा जाता है, व्हेन इट इज स्मेल्ड। कुनीन इज बीटर, कुनीन कड़वी होती है, कुनीन इज बीटर when it is tasted। तो कुछ सेंटेंसेस इस तरह के भी पैसिव वॉइस में मिल जाते हैं, तो हमें देखना होता है कि इनकी नेचर क्या है। तो हम इस तरह से बनाते हैं, when it is tasted, when it is smelled, when it is tasted, इस तरह से फॉलो करते हैं। अब कुछ दूसरी तरह के सेंटेंसेस हैं। टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। जैसे इंडिया वांट्स टू अटैक पाक, इंडिया वांट्स टू अटैक पाक, भारत पाकिस्तान पे हमला करना चाहता है, भारत पाकिस्तान पे हमला करना चाहता है। इंडिया wants Pak, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, इंडिया wants Pak to be attacked, India wants Pak to be attacked। There are many examples। I want to do it, I want, here this is another example। Women like to talk, women like to talk, women like to be talk, women like to be talk। तो कुछ सेंटेंस हम टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म फॉलो करके बनाते हैं। इंडिया वांट्स टू अटैक पाक, इंडिया वांट्स पाक टू बी अटैक, women like to be talk, women like to talk, women like to be talk। उधर एग्जांपल है, a stick is to walk, छड़ी चलने के लिए होती है। a stick is to plus b plus third form, a stick is to be walk। So we follow these rules while changing passive voice of such type of sentences। Okay, my hair needs cutting, my hair needs cutting, my hair needs to be cut, my hair needs to be cut, my shoes needs repairing, my shoes needs repairing, my shoes needs to be repaired। There are many examples here। My hair needs cutting, my hair needs to be cut, passive voice of this, my hair needs to be cut, my shoes needs repairing,
My shoes needs to be repaired. So dear students, there are many sentences. If you go through your books carefully, you will find different sentences, and you will find the solution of these sentences. So for today, this is sufficient, and you will write 30 sentences of these exercises. Thank you for a nice day.